Okay. Hello everyone. I'm Sudipta ma'am, welcoming you all to Vedang Civil Services powered by Vedang Institute of Technology. Tell me, how are you everyone? सब केमिति अछो और टिके जल्दी जल्दी कनेक्ट हेले हमें टिके क्लास को आगो को नेबा मते कहि दियो ऑडियो वीडियो सब क्लियर अछि सो दैट आई कैन प्रोसीड विथ माय क्लास. Yes. All ready, all set jiba. लास्ट क्लास रे आमे सेम एग्रीकल्चर रो किछि डिसाइड को माने डिस्कशन करी थिले. आज सेशन भी आपणकर सेम ही रहउची एग्रीकल्चर ऊपर ही देखुचे. एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर केमती बायोटेक्नोलॉजी सहित ऐड हेकी होची हैला. रिमोट रिमोट ओके फाइन. बिफोर स्टार्टिंग द सेशन फास्ट देखि दियो आपणकर सिविल सर्विसेज पे आपण माने जो माने भी प्रिपरेशन करूचंती. दिस वन विल बी वेरी हेल्पफुल टू यूज because विश्वास बैच आपणकर OCS प्री 2025-26 ईयर पे जो माने प्रिपरेशन करूचंती प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पे वैलिडिटी 1 ईयर रहूची प्राइस 7000 ओनली. विश्वास बैच पे जदी आपण माने प्रिपेयर करूचंती मींस प्री मेंस 2025 दिटा तक मिसी के आपण माने रहूची 1.5 ईयर वैलिडिटी 11999. मेंस बैच पे जदी प्रिपरेशन करूचंती मेंस 2024-25 जो माने ऑलरेडी प्रीलिम्स क्लियर करि सारी चंती तांको पई वैलिडिटी 1 ईयर रहूची एंड 8999 रहूची बैच प्राइस. बट जो माने ऑप्शनल बैच नबा को चाहउचंती ऑप्शनल 2024-25 पई तो 4999 रहूची बैच प्राइस. ओके, जो माने भी इंटरेस्टेड अछंती से माने जॉइन करि पारिबे. नो मैटर हमर ऑलरेडी आप रे क्लास स्टार्ट हे सारलानी. आसो द फर्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची ताकू टिके डिटेल ले जानिबा. द व्हीट राइस पल्सेस कोन कहूची ना व्हीट राइस एंड पल्सेस सीक्वेंस इज एन एग्जांपल ऑफ. जेते बेले व्हीट कथा कहूची राइस कथा कहूची एंड आपनकर कोन ना पल्सेस कथा भी कहूची ताहाले हम एठी राइट आंसर कहा को चूज करिबा ना व्हाट विल बी द राइट वन. जल्दी कुह कोन हबो हेई परिबो एठी राइट आंसर. मोनोक्रॉपिंग तो बिल्कुल आपनकर हबनी. मोनोक्रॉपिंग आपनकर कोन कहूची ना दैट ग्रोइंग द सेम क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर ऑन द सेम लैंड मींस आपनकर मोनोक्रॉप माने कोन ना सेम लैंड थिबो सेम लैंड आपण मानकर थिबो एंड हमें कोन कहि परिबा ना सेम टाइप रो क्रॉप थिबो. सपोज आपणकर धान चाष होउची देन सेम धान चाष सब वर्ष सेम टाइम रे ही होथबो दैट विल बी योर मोनोक्रॉपिंग एंड से लैंड को हमें कोन कहबा ना दैट इज द मोनोक्रॉपिंग लैंड. एग्जांपल आपण माने राइस 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 एवरी सेशन रे आपणकर कोन ना राइस ही चलिबो. देन कोन आसिला ना राइस पल्सेस दीटा जाक मिसोची व्हीट हबो राइस हबो पल्सेस हबो एटा डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस रे आसिला हमें ता कोन कहूचे ना दैट इज कॉल्ड एज द क्रॉप रोटेशन. कोन कहबा ना ताकू क्रॉप रोटेशन कहबा दैट ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेसिव सीजन टू इंप्रूव द सॉइल फर्टिलिटी एंड रिड्यूस द पेस्ट कंट्रोल. कारण धान चाष कला बेले आपण जो पेस्ट
पेस्टिसाइड यूज करिथिबे नो मैटर गहम चाष कला बेले डिफरेंट करिथिबे जदि कंटीन्यूअसली हमें केवल गोटे पेस्टिसाइड यूज करी चलीबा गोटे किस्मर चाष करिबा लागि ताहाले से माटीर उर्वरता कमी जीवन ना नाही मते कुओ टू improve the soil fertility and to reduce the pests आमे कोन करूछे ना क्रॉप रोटेशन करूछे यार परफेक्ट एग्जांपल आपनकर व्हीट रहूची व्हीट आपनकर को सीजन रे हुए जेमिति व्हीट राइस एंड पल्सेस रहूची व्हीट आपनकर को सीजन रे ना रबी सीजन रे हुए अगेन आपनकर जदि राइस देखिबा को सीजन हबो ना ये आपनकर खरीफ सीजन हबो हाँ ना नहीं अगेन जदि पल्सेस देखिबा ये को सीजन रे हबो ना अगेन ये आपनकर केबे ना रबी सीजन रे हबो हैला सो दिस विल बी द सीक्वेंस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोन आपनकर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बाकी रहिला स्ट्रिप आमे कहा को कहिबा द स्ट्रिप क्रॉपिंग that means that growing crop in the long strips alternated to the reduced erosion कोन ना आपण मान देखिथिबे पूरा धाडी प्रणाली रे हमें ताकू कोन ना लगैथिबा जे कोनसी गछ बीन्स गछ हैला या फिर जे कोनसी गछ हैला आपण मान जानिथिबे जेमति कि गहम गछ हैला भी ताकू छाडी दियो गहम तो धान सहित समान हे जिवो सेम टाइप रो तार पैटर्न मेज स्ट्रिप हैला ग्रास स्ट्रिप हैला ऑन द सेम स्लोप आपणकर कोन सोपान प्रणाली रे देखिथिबे एई टाइप रो ही गोटे देन नेक्स्ट गोटे एई टाइप रो आपणकर कोन गछ लागि थाय ना नै मते कुआ सेम एई टाइप रो ही गछ थाय ना तो एटा को हमें कोन कहूचे ना दैट इज द स्ट्रिप क्रॉपिंग एग्जांपल आपण माने कोन मेज स्ट्रिप और द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉन्ग ग्रास स्ट्रिप को नै परिबे द रिले क्रॉपिंग कहले कोन कहितली ना दैट सोइंग द नेक्स्ट क्रॉप बिफोर द प्रीवियस क्रॉप इज फुल्ली हार्वेस्टेड कोन ना लेट रे आपणकर सपोज आपण कहि परिबे दैट वी विल सो the wheat seeds in standing the rice crop that means कोन जेते बेले आपनकर धान चाष चलीथिबो ता भीतर हम माने कोन ना wheat रो सीड को सोइंग करबा स्टार्ट करबा in that case हमें कोन कहि परिबा ना that will the relay cropping जेते बेले आपन माने कोन कहि परिबे ना sowing the next crop before the previous one crop sown before the previous cultivated हैला नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची देखो आसो त राइट आंसर कोन हबा व्हीट राइस पल्सेस मते कुआ कॉटन ग्राउंडनट सिस्टम इज कॉमन इन कॉटन ग्राउंडनट सिस्टम आपनकर कॉमन रहइबो कोठी कॉटन ग्राउंडनट सिस्टम इज कॉमन इन वेयर पंजाब रे आपनकर कॉमन रहइबो की cotton grows but हमें कहि परिबा कि the groundnut doesn't grow well due to the climate in Punjab yes or no but Gujarat रे कोन हबो ना both cotton and groundnut आपनकर climatic condition को satisfy करिवो that's why हमें कहि परिबा the Gujarat रा black soil and the semi arid climate support both the cotton and the groundnut yes or no yes the Gujarat example आपण माने परिबे कोन the Surastra region widely practices the cloth groundnut हर नै मते माने cotton groundnut होची then आपण माने जानि चंदी ओडिसा for the groundnut आपनकर हुए but cotton is limited in the Kalahandi region हैला आसान हेले आपण माने जानि चंदी that is too humid for the cotton and आपण माने जानि चंदी सेठी कोन ना टी कल्टीवेशन बेस्ट की हुई क्लियर नेक्स्ट चलो कोन कहूची देखिबा The cotton groundnut cropping system is particularly common in the state of Gujarat, which is the leading producer of both the crops in India. Next question कौन अछि मते कुह the term mixed farming means मते कुह ए जो term रहउची mixed farming ता माने कोन मिसा मिसी चाष एमति की किछि mixed farming माने आपण माने कोन बुझिबे मिसा मिसी चाष की कोन होइछ ऑप्शन 1 ना that is growing several crops is that so मल्टी जो ग्रोइंग सेवरल क्रॉप्स आपनकर कोथि हबो त मल्टी क्रॉपिंग रे आपनकर हबो जोथि लैंड यूज हुए कोथि पई ना फॉर मोर देन वन क्रॉप पई हमें कहि परिबा सपोज राइस पई हमें यूज करू छे एंड सेम टाइम रे हमें वेजिटेबल्स पई भी यूज करि परिबा दैट इज नॉट द मिक्स्ड फार्मिंग बट द ग्रोइंग सेवरल क्रॉप्स इज नथिंग बट द कोन ना याकू हमें कहि परिबा दिस इज मल्टी क्रॉपिंग
what multi-cropping. Next, the combining crop production with livestock rearing. एटा आपनकर हेई परिबो कि? Tell me. Yes, the crop plus livestock together ame कहि परिबा कोन? The farming system combining crops and animals for mutual benefits are the कोन? Na mixed farming. Mix है two types रे mix है गला जेमति कि cows provide the manure हाँ ना नहीं and crops provide the fodder कौन कोई परिबो ना इठा आपण माने रिलेट करि परिबे the cows who manure सहित हाँ ना नहीं and आपण माने रिलेट करि परिबे काहा को ना crops को कोन as the fodder yes or no बुझियला next मते कुआ. So the mixed farming means combining crop production with livestock rearing where the farmers grow crops and raise animals like the cattle, poultry, goat together on the same farm, creating a self-sufficient system that uses the crop byproducts as animal feed, the animal manure as fertilizer for crops, offering stable income and better soil health. Next question कौन अछि देखिबा आसो ना in livestock economics variable cost कौन कहूची ना in livestock economics variable cost includes what is that the barn construction मते कुह barn construction कहिले कौन बुझुचो is that so the variable cost in livestock economics that include की the vast जोडा हमर कहूचे कौन barn construction that means कौन this is a fixed cost जोडा कि आपनकर only once occur. Okay, this is very fixed. Then asila the purchase of animals that also fixed. That is initial investment apanଙ୍କର one time କରିବାକୁ पड़िबो. Then asa the feed and fodder. हाँ ना नहीं मते कुआ because आपण मानकु कहली the daily operational cost that changes the number of animals सेतिरे आपणकर कोन ना change हे चालिबो crop भी change हबो and आपणकर कोन ना feeder भी change हबो हाँ ना नहीं कुआ. Very good evening sad life. आसा so example आपण माने कोन कहि परिबे the feeding 10 cattle versus 30 cattle has a different cost हाँ ना नहीं कहूनो जदि आपण माने गोटे 10टा गाई को आपण माने पाळुचंती एंड आपण माने इठी 30टा गाई को पाळुचंती तो कॉस्ट कोन आपनकर सेम आसीबो कि निहाती डिफरेंट कॉस्ट आसीबो द आपनकर कोन ना feed and fodder आपनकर सेपरेट हेबे land leveling that is a one time investment ए सब आपण मानकर one time investment except the feed and fodder because आपण मानकर जते बेले गोटे feed आपण रखुचंती धीरे धीरे कोन तांकर वंश विस्तार होउची and से मानकर खाइबा पिया को आपण को वृद्धि करिया को पड़िबो सेथिरे आपनकर इन्वेस्टमेंट बढ़ी चलिबो. So feed and fodder costs are considered variable cost in the livestock economics because they change with the number of animals raised and the amount of output produced. Example आपण माने milk production na nahi paribe. Next ko the highest recurring cost in dairy production. Highest recurring cost soi podo amita kai uthilo soi podo ko mate highest recurring cost in dairy production kon hobo what will be the highest recurring cost veterinary care hei paribo ki no veterinary care apankara that will be the low periodic cost ha na nahi mate ko that will be the low periodic cost. Veterinary care केमती हबा आसी कि मन इच्छा आंसर मारले मत चिड़ लागिबो सेमती मारिबो नाही क्वेश्चन कोटिके बुझो तार डिमांड को बुझो तापरे हबो एठी कोन आसिला कोन हबो ना the highest recurring cost in the dairy production obviously the कोन ना feed and fodder ही हबो labor आपनकर high but not the highest बट जते बेले खाइबा कोन वंश विस्तार हबो गाई गोटे छुआ कला से छुआरु आउ गोटे छुआ हैला पुणी तांकर वंश पड़ी कि तमे गोटे गाई धरि के आस्तिबो गुहाळ को गुहाळ भीतर तमरा 5-7 गाई बढ़िले तांको खाइबा पीबा भी कष्ट तुमको पड़िबो ना नहीं सेतिकी कॉस्ट अधिक आसीबो सो हमें कहि परिबा कि द मेजर डायरी कॉस्ट 50 to 75% ऑफ टोटल रिकरिंग कॉस्ट रु बाहरी जाय यस और नो yes the green fodder hela the concentrate माने कोन concentrate hela the silage hela ए सब आपनकर feed and fodder ऊपर ही dependent हो हैला and water will be the low cost enough. Next मते को the cooperative movement in dairy was started under the cooperative movement in dairy jaldi dairy cooperative movement is associated with कहा सहित blue revolution सहित की blue revolution कहले तमे माने जानिचो कहा सहित related ना fish and fisheries सहित related then असला ऑपरेशन फ्लड टिके मने पकेला डायरी कहले कोन रिलेट करि परछो मिल्क को की
मिल्क कहले कौन रिलेट कर पाछो व्हाइट रिवॉल्यूशन मते कुह ए जो ऑपरेशन फ्लड हैला ताको हमें कहा सहित रिलेट करूछे ना आपनकर कोन ना व्हाइट रिवॉल्यूशन सहित व्हाइट रिवॉल्यूशन सहित यस और नो एंड व्हाइट रिवॉल्यूशन को हमें अदरवाइज कौन कहूचे ना रिलेटेड विथ द मिल्क प्रोडक्शन कहा सहित ना मिल्क प्रोडक्शन सहित रिलेट करूछे यस और नो सो ऑपरेशन फ्लड विल बी द राइट वन यस और नो दैट फॉर्मेशन ऑफ द इंडियास डायरी कोऑपरेटिव एग्जांपल्स आपण माने नै परिबे अमूल हैला या फिर एनडीडीवी हैला आपनकर या अंडर ही फॉर्म हेसी यस देन पिंक रिवॉल्यूशन कहले कोन बुझो मते कहलो व्हाट डू यू मीन बाय द पिंक रिवॉल्यूशन द मीट कोन ना मीट प्रोसेसर्स मीट प्रोसेसिंग यूनिट ओके मीट प्रोसेसिंग सेक्टर को हमें कोन कहूचे दैट इज द पिंक रिवॉल्यूशन क्लियर चलो नेक्स्ट मते को द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम नाउ इंक्लूड्स द किसान क्रेडिट कार्ड अच्छा पिंक कहले ओनियन को बुझुचो धन्य हो तमे धन्य सस्मिता आसा द किसान क्रेडिट कार्ड नाउ इंक्लूड्स व्हाट क्रॉप लोन ओनली किसान क्रेडिट कार्ड रे क्रॉप लोन देखो एबे पछे कोन नाउ इंक्लूड्स व्हाट दैट मींस आपनकर जो इनिशियली थिला इनिशियली गाइस एटा ही थिला किसान क्रेडिट कार्ड जते बेले आस्थिला ना सेटा आपनकर इनिशियली क्रॉप लोन ओनली मेंशन करा जाउतला ओनली प्रोवाइड करा जाउतला हैला बट नाउ द लाइवस्टॉक डायरी फिशरीज लोन मींस द लोन फॉर द लाइवस्टॉक हैला डायरी हैला फिशरीज हैला they are the कोन ना क्रेडिट फॉर द फार्म एंड द लाइट सेक्टर अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी बोली हमें कहि परिबा एग्जांपल अपन नै परिबे द क्रेडिट फॉर द काउज द गोट्स द फीस अपन मान देखि दिबे आपनकर कोन डायरी फार्म माने फार्मिंग करिबा लागि आपनकर गाय आनी की चाष करिबा लागि आपनकर छेली रखिबा पई ए सबु हैला फिशरीज हैला पोखरी खोली के अपन माने माछ चाष करि परिबे तो या पई अपन मान को लोन भी प्रोवाइड करा अछि हाउसिंग लोन्स आपनकर हबने दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द केसीसी हैला कंज्यूमर लोन्स आल्सो नॉट एप्लीकेबल हियर नेक्स्ट क्वेश्चन मते को द वैल्यू एडिशन इन लाइवस्टॉक प्रोडक्ट्स मीन value addition in livestock products that means what quick value addition in livestock product देखो reducing profit हबो कि no that opposite of the value addition reducing the profit आपनकर कोन value addition करा जिवो जदी ताहाले हमर प्रॉफिट बढ़िबो केमति हमें त ऐड करी करी चली थिबा ताहाले हमें जानिबा केमति हमर केति की प्रिंसिपल वैल्यू थिला हमें केति की इन्वेस्ट करलेनी केति की प्रॉफिट हमकु दरकार so that is the processing to increase the value means हमें कोन कहि परिबा ना converting the raw product to the processed item with the higher market value आमे जहाँ भी रॉ आइटम को कोन प्रोडक्शन रे बाहर करूचे ताकू पुनी प्रोसेस करिबा विथ अ हायर मार्केट वैल्यू दैट विल बी द प्रोसेसिंग फॉर द हायर मार्केट वैल्यू एग्जांपल्स आपण माने कोन नै परिबे ना मिल्क रु आपण मानकर कोन बाहरची मते कुह मिल्क टा आपनकर रॉ रे बिक्री होची होना नै कुह मिल्क रा भी डिमांड अधिक अछि किंतु मिल्क रु जदि हमें चीज बाहर करूचे कोन ना मिल्क रु चीज बाहर करूचे मिल्क रु घी भी बाहर करूचे ताहले यार भी वैल्यू अधिक क्षीर ठो आमे कोन बाहर करछे ना मीट बाहर करूचे मीट रो डिमांड अधिक अछि एंड मीट रो आपण मानकर कोन होची ना सॉसेज सब बाहरुची कोन ना सॉसेज स्पेलिंग केंद्रे SAUSES ना कि सॉसेज बाहरुची तो तार भी यस एग्जांपल मिल्क एंड मीट यस एंड आपण माने आ कोन दे परिबे ना आपण माने जानि चंती यू कैन कोन हाइड आमे करि पारुचे होना नै मते को मींस आमे डिफरेंट टाइप रो जेमिति की कोन हैला फॉर द लेदर माने कहि परिबा द लेदर पर्पस रे आमे डिफरेंट टाइप ऑफ जिंस जेमिति की हैला मेंढा हैला ताकू आमे माने पोसुचे ना नै को तो ताकू आमे रॉ मटेरियल रे भी बिक्री करि पारुचे लेदर को एंड खाली ऊल उडा को माने तार बाहर करी कि लुमोडा को बिकी पारुचे या फिर ताकू आमे प्रोडक्ट रे कन्वर्ट करी कि बिकी पारुचे सो देन ब्रेकिंग क्वालिटी दैट इज इनकरेक्ट सेलिंग ओनली रॉ प्रोडक्ट दैट नॉट द वैल्यू एडेड नेक्स्ट मते को द बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस फॉर इंप्रूविंग द सीप ऊल क्वालिटी ए सीप ऊल कथा ही कहतली मते को द ऊल क्वालिटी इंप्रूवमेंट दैट इन्वॉल्व्स व्हाट ऊल क्वालिटी आपनकर इंप्रूव केमिति हबो केमती हबो द अर्ली शेयरिंग रे हबो की दैट प्रिवेंट्स द कंटामिनेशन ऑफ वूल कोन ना जदी अर्ली टाइम रे हमें शेयरिंग करी देबा ताहाले हमर कोन करिवो
steering haba na nahi? Yes, so the early time prevent kariba tahale that can help with the contamination. Even the selective reading hele that genetics improves the fiber strength and the fitness. The balanced nutrition that feeds the influence fiber length and quality also. And right answer kon hijiba thi na all of the above. Next one देखो, the layer farming profitably depends mainly on layer farming, that is depend on the profitable business. होना नहीं मत देखो, तो layer farming को हमें कहूचे this is a profitable business, but the profitability कहाँ पे depend करिवो, कहाँ ऊपर को हमें कहिबा एक price ऊपरे, feed cost ऊपरे, आपनकर floor design ऊपरे तो यार किसी that they are not माने they are not even indirectly related with each other. Yes ना नहीं? Then color of eggs, हाँ color of egg ऊपरे कौन depend करछि नहीं, weather ऊपरे somewhere, but the egg price and the feed cost ऊपरे 60 to 70% of the cost आपनकर feed रो आसुछि directly, that affect the profit. Even the higher egg prices better revenue. हना नहीं मते कुआ जेते अधिक cost आमे बिकुचे सेते अधिक revenue generate होउछि. So yes, that is directly related with. Next मते कहिबो, goat meat has high demand because छेली रो खीरो देखिछो केबे, तो मते कुह गोट रो मिल्क आपनकर हाई डिमांड, अच्छा सॉरी खीरो एटे कहि देली मिल्क भाबिली ना, गोट रो मीट माने मटन कथा कहछि ना कि हां, तो कुह सबटु कॉस्टली आपनकर चिकन खाओ, मटन खाओ, फिश खाओ, बट मटन टिके कॉस्टली अमंग ऑल दिस, बट ताठु तो अधिक आपनकर कंकड़ आसी जाउछि, नो मैटर, बट स्टिल द गोट मीट हैज द हाई डिमांड. व्हाई? बिकॉज़ इट हैज अ लो कोलेस्ट्रॉल. हे लो कोलेस्ट्रॉल आपनकर अछि, देखो चिकन अपेक्षा मटन जदि आपण माने खाइबे से चर्बी को छाड़ी कि देन दिस विल बी वेरी हेल्थी. डॉक्टर भी कहते रेड मीट खाओ, मन रखि था. लो फैट एंड इजी डाइजेशन, यस प्रिफर्ड एल्डरली माने आमे केते बड़ा हमर एज हमर एडोलसेंस को नै कि आमे खाइबा सेति कि डाइजेशन हमर कैपेसिटी थिबा दरकार. जो माने रोगी ना हेतिबे दे आर सिक से माने तो अल्प खाइबा को पड़िबो, इवन न खाइबा को भी पड़िबो. कल्चरल प्रेफरेंस माने किछि किछि रीजंस रे यस, सो ऑल ऑफ द अबव सहित ही हमें सिला. नेक्स्ट मते कुह, यस ब्लैक बेंगल गोट इज फेमस फॉर, ब्लैक बेंगल गोट आपनकर दिस इज अ टाइप ऑफ माने कोन गोट, तो मते को दिस इज फेमस फॉर द हाई वूल प्रोडक्शन की नो, आपनकर कोन गोटे अछि गोटर ना होछि पश्मीना, कोन पश्मीना यारो कोन पूरा वूल पाई अधिक डिमांड रही छै पश्मीना टाइप रो. हाँ मीत मु वेट करछि तमे केबे पठेले मु खाइबी बोली, डेस्परेटली आई एम वेटिंग फॉर दैट. को द हाई कोन हाई फेकॉन्डिटी एंड द मीट क्वालिटी या पे डिपेंड करिवो कि यस दैट प्रोड्यूसेस मोर किड्स पर बर्थ एंड हाई क्वालिटी मीट, हैला that's always depend upon this. The black Bengal goat is famous for the high fecundity and the meat quality. Next mate kuha, major economic advantage of buffalo farming. Major कौन रहिबो, major economic advantage of the buffalo farming, जल्दी anyone? The economic advantage of the buffalo farming कौन हे परिबो, higher fat and the higher price. होना नहीं मते कुआ जेते मोटा बुफालो हबो सेते अधिक कोन ताटू घियो बाहरिबो, माने सेति के अधिक छेली बाहरी माने मिल्क बाहरिबो, and सेति के अधिक मिल्क बाहरले सेति के अधिक घियो बाहरिबो, खुआ बाहरिबो, पनीर भी भलो बाहरिबो. सो अधिक प्रॉफिट कोन हबो, जेते अधिक फैट कंटेंट हायर द हायर विल बी द प्राइस. होना नहीं कुआ. नेक्स्ट मते कुआ, डायरी कोऑपरेटिव्स मेनली हेल्प फार्मर्स बाय, the dairy cooperatives mainly help the farmers by increasing taxes, providing assured market and fair price, reducing milk quality, or the increasing kono na the middleman. Kon hobo right answer कहलो एठी? Yes, that will be the ensuring the fair price and the market, because that removes the middleman and the farmers get the better value. होना नहीं? Got it? Reducing milk quality, that is just the opposite. Cooperatives ensure kono na quality of the testing. Next mate kuo, calving interval affects. मते कुआ जो calving अछि, calve means कोन आपण माने कुहंतु, calving interval means कोन, जेते बेले गाई रो गोटे छुआ होउची बाछुरी, calf रु calving होउची, हैला बाछुरी जेते बेले खीरो खाय,
So mate kuo the calving interval affects the milk volume and the annual income, color of milk, housing pattern. देखो color of milk, housing pattern and the breed size भी जमा depend करिवो नाही. Right answer कौन हबो? The milk volume and the income ऊपर depend करिवो. Short interval बहुत जदी छोट माने बहुत कम दिन में गोटे बाछुरी को क्षीर खाइबा को देले तापर ताकू छड़े देले ताहले कौन हबो ना बहुत लैक्टेशन साइकिल तार लॉन्ग टर्म पय तार लैक्टेशन साइकिल चलिबो एंड बहुत क्षीर बाहरिबो. हर नै मते कुओ. Yes. आ जदि हम बाछुरी के छाड़ी देबा जा तू तो मां पाखरु खुशी रे क्षीर खाई डे बोली ताहले तो हमर लॉस ही हबो. जदि हमें ताकू कोन हमें माने इनडायरेक्टली अल्टीमेटली कोथि पई क्षीर पई ही गोटे गाय को तो माने पोसु थाओ ना. नेक्स्ट मते को द एग्री स्टैक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू व्हाट? एग्री स्टैक एम्स टू व्हाट? कौन हबो? The right answer देखिलो create a digital database of the farmers. एटा हेई परिबो कि digital database आपनकर फॉर्म होउची कि the land records plus the crop data plus weather plus advisory आपनकर कोन that create a digital database of the farmers. If with the increased petrol pump, these are not the trained fishermen only that limited to the agriculture, not for the fisheries alone. Next मते को the PMFBY कौन कहिची ना PMFBY को आपण मान रिलेट करि परिबे. क्विक क्रॉप इंश्योरेंस को नै कि हबो कि क्रॉप इंश्योरेंस को नै कि हबो इंक्रीज इरिगेशन को नै कि हबो सीड्स को फर्टिलाइजर्स को ए हबो क्रॉप इंश्योरेंस को नै कि वेरी गुड दैट कवर्स द क्रॉप लॉस ड्यू टू द नेचुरल कैलामिटीज. सो क्रॉप इंश्योरेंस को नै कि आपनकर PFVY ही हबो सॉरी PMFVY ही हबो. Irrigation, seeds, fertilizers, these are totally not. So the PMFBY stands for the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Bima itself means insurance, that which deals with the crop insurance. Next mate kuo Digital India program mainly supports what? Digital India program mainly आपनकर कोन support करूची? Paper subsidy आपनकर provide करूची कि no? That aims the paperless governance. हो ना नहीं? Even next आपनकर कोन अछि मते कुओ? Next कौन अच्छी मते कुआ? Tell me, the ICT in agriculture, is that so? Yes, very good. The e-NAM hela, the Kisan apps hela, the digital extension hela, these all are the ICT in the agriculture. Hona nahi kuwa? Mining hela, fishing only hela, these are not in touch. So, the Digital India program primarily supports the ICT in agriculture. The program aims to transfer various sectors including the agriculture through the use of information and communication technologies, that is the ICT. Then mate kuha granting of agricultural goods is done through granting of कहा को हमें grant provide करूचे. The granting of agricultural goods is done through what? कहा द्वारा हबो मते कहिलो मते कुह AGMARK रा फुल फॉर्म कोन हबो ना that is the agricultural marketing. AGM agricultural marketing something थिला ना मने पड़नी टिके एक्जेक्टली फुल फॉर्म टा agricultural marketing और ए फॉर कोन टिके ताकू चेक कर द भले एटा कि 1937 हेतला अंडर द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर एक्ट 1937 35 ना 37 1937 रे आपनकर ये फॉर्म हेतला and the right answer will be the granting of agricultural goods and done through the AGMRK. And what do you mean by the FCI? That is the Food Corporation of India आपनकर केबे एस्टैब्लिश हेची 1965 रे मने रखि थांतु. And the RBI the Reserve Bank of India आपनकर केबे हेची ये भी आपनकर 1935 रे हेची द सेम पाखा पाखी ईयर. Then आपनकर आसिला कोन ना UIDR that is the Unique Identification Authority of India. केबे एटा हेची ये बहुत लेट रे हेची 2009 रे हेची बोथे 2009 ना 69 रे 2009 रे हेची है ना. क्लियर वेरी गुड. चलो नेक्स्ट मते कहिबो. So here the AGMRK agricultural mark is a certification mark employed in the agricultural product in India, ensuring they conform to a set of standards approved by the Directorate of Marketing and Inspection DMI, an agency within the government of India's Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare. Next मते को इनाम is related to इनाम आपनकर कहा सहित related मते कहिलो
इनाम कहले कौन बुझुच जो माने इनाम रो फुल फॉर्म कहबो मु तमन को गोटे इनाम भी देबी so the inam is stand for the electronic national agricultural market ना electronic national agriculture market not agriculture market जोटा कि आपण कोन कहबे this is a pan India digital trading platform कोन online trading and agricultural produce हाँ नहीं and that कौन इंटीग्रेट करके रखे द एपीएमसी कौन जिते सब मंडी माने अछंती जोटी धान बिक्री हुए गहम बिक्री हुए नियरेस्ट आपनकर लोकल रीजन ने जोटा अधिक चाष हुए सेठी बिक्री हुए तो सब मंडी रे आपण मानकर कोन जाय कि ना गोटे प्राइस ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करबा लागि एटा ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बोली हमें ताको कहूछ हैला ऑनलाइन एजुकेशन पई हमें जानि छे लाइक नॉट एग्रीकल्चर मार्केट आपनकर इनाम तो हबने एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म इज द की पर्पस ऑफ द इनाम आल्सो मोबाइल बैंकिंग सॉइल टेस्टिंग इज डिफरेंट so inam is related with the online trading of the agricultural produce next mate kahibo the sprinkler irrigation is similar to sprinkler irrigation आपनकर similar कहा सहित मते कहिला the sprinkler irrigation is similar to रेनफॉल सहित समान हबो कि स्प्रिंकल करिबा स्प्रिंकलर माने कोन स्प्रिंकलर ता माने कोन वर्षा भली आपनकर सरु सरु पानी आपनकर स्प्रिंकल हबो ऑल ओवर द ग्रास तो हमें कहि परिबा द स्प्रिंकलर irrigation that sprays the water in the fine droplets under the pressure like the rainfall होना नहीं को मते yes or no yes very good आपनकर केनाल फ्लो कहले कोन कहूचे ना द केनाल irrigation uses the gravity flows आपनकर कोन सरफेस इरिगेशन दिस विल बी नॉट द टैंक वाटर कहले कोन कहूचे ना हम स्टोरेज स्ट्रक्चर को कहूचे दैट इज द टैंक वाटर एंड रिवर वाटर विषय जानि छ दिस इज द वाटर रिसोर्स so sprinkler irrigation is a method of applying water to crops that is designed to mimic natural rainfall water is distributed through a system of pipes under pressure and then sprayed into the air through nozzles breaking into small drops that fall over the ground next mate ko canal irrigation suffers mainly from canal irrigation आपनकर suffer करे mainly from quick soil moisture increase कराए कि this is a normal effect and is generally beneficial होना नहीं कोटा soil moisture ता then आपण मते कोंतु water logging and salinity yes or no so that is unlined canals that causes कोन करे ना seepage आपनकर cause करे so that's why मैं कहि परिया the canal irrigation suffers mainly कोन करे ना online canals hela that will cause the storage or that raising the water table and creating the water logging ये सब आपनकर कोन ना water logging salinity को develop करिबा लागि और the poor drainage leads to the कोन salt accumulation so it salinity को आपनकर कोन कमे दोछि that's why हमें कहि पारि माने बढ़ौछि जोथरा हमें कहि परिबा reduce करूछि soil productivity को and extremely this one is extremely important for the OPSC and UPSC perspective keep it in your mind next देखो मते कुह द बोरवेल इरिगेशन इज लीस्ट सुइटेबल इन बोरवेल इरिगेशन आपनकर लीस्ट सुइटेबल हबो कोथि पय द बोरवेल इरिगेशन इज लीस्ट सुइटेबल फॉर कोथि हबो जदि आपनकर रॉकी रीजन्स पड़ी गला केते आपन कुओ खोली परिबे केते बोरवेल खोलिबे पानी तो आपनकर सहज के बाहरी बनी होना नहीं मते कुओ सो द हार्ड रॉक दैट फॉर्मेशंस लाइक ग्रेनाइट हला बेसाल्ट हला ए भला जदि लैंड पड़ी गला दैट हैव द पुअर ग्राउंड वाटर स्टोरेज माने ग्राउंड वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही कम रहइबो सो द हार्ड रॉकी रीजन्स इज आउट ऑफ द टॉपिक क्लियर द कोस्टल ओडिसा हेले आपण जानि संते सलाइन इंट्रोसन आसीबो लुणी पानी बाहरिबो आपनकर माटी तळु नॉट मीठा पानी आसीबोनी सेंट्रल इंडिया हेले हमें कहि परिबा हां सेंट्रल इंडिया भी हेइ परिबो दैट आपण कहि परिबा टॉप सेंट्रल इंडिया हैज आल्सो हार्ड वर्क एरियाज बट द प्लेन्स एंड यूपी आपण मानकर दैट इज द वेरी वेल and highly suitable for the bore wells and due to the deep and fertile alluvial lands next मते को द जवाहरलाल नेहरू लिफ्ट कैनाल इज लोकेटेड इन जवाहरलाल नेहरू लिफ्ट कैनाल आपनकर कोठी लोकेट अछि मते कहिला where is the जवाहरलाल नेहरू लिफ्ट कैनाल is located in quick ओडिसा तो बिल्कुल नहीं because ओडिसा has no major lift irrigation canal by its name exists in the Odisha that we know आमर कोन अछि हीराकुद अछि आमर कोन अछि आमर रेंगाली अछि बट लिफ्ट कैनाल आमर कोन ओनली हरियाणा रे ही अछि जवाहरलाल नेहरू लिफ्ट कैनाल is a part of the western Yamuna canal
system in the Haryana, and it lifts Yamuna water to the higher elevation regions using the pumping station for irrigation also. Kerala has river based irrigation, not माने any major lift canals कोडी थाए जो पाखा पाखी आपनकर कोन लैंड माने न थाए आपनकर रिवर सोर्सेस न थाए ओशन सोर्सेस न थाए हमें सेठी कोच लिफ्ट कैनाल दरकार फे जोटा कि आपण माने इजीली रिलेट करि परिबे हैला का सहित हरियाणा सहित नेक्स्ट मते को so the furrow irrigation is commonly used for furrow irrigation कोन and एटा को हमें काहे की यूज करछे furrow irrigation कोन मते को and it is commonly used for कोन paddy पई करिबा की rice requires the flooding कोन not a narrow channels is required or is sufficient to cultivation for the rice the rice cultivation that is required always the flooding like the water like hence हमें कहि परिबे the furrow irrigation is unsuitable for the rice or the paddy cotton and sugar cane हेइ परिबो कि yes guys कोन ना raw crops माने these are the raw crops needing कोन controlled irrigation and the water flows between the ridges only and हमें कहि परिबे कि बहुत ही less water suppose आपण मानकर एम्ति कोन ना लाइन लाइन हे कि कॉटन चाष होउची and बहुत ही कोन ना वारी के सेठू पानी स्प्रे करा दिबो जेति कि रिक्वायर ऑन ए कंट्रोल्ड मैनर क्लियर यस नेक्स्ट चलो मते को व्हिच रीजन flows through which region follows the wheat sugarcane rotation extensively जल्दी को जल्दी wheat or sugarcane rotation extensively कोठी हुए मते को जते बेले wheat कथा कहि देला त माने जानिछ कोन एटा आपनकर पंजाब एंड हरियाणा रीजन आसीबो नै the both the crops suit the कोन climate soil and irrigation आपनकर पंजाब वाला रीजन सहित सेम हबो and the conditions of the region कोन ना sugarcane because sugarcane आपनकर long duration पई चलिबो wheat हला only rabi season रे चलिबो this is highly profitable rotation in the north India only clear Tamil Nadu hele hame kahiba only sugarcane is grown here but the wheat is minimal due to the climate kono unsuitability and Odisha कहले जानछि not a major wheat growing state or region हमें जानछि rice पई हमर Odisha best clear चलो West Bengal is also for the rice dominate करी के रखिछि next मते को rubber is mostly grown under which cropping system rubber आपनकर को cropping system रे majorly grown हुए मते कहिलो rubber is grown under co-cropping system that is the plantation cropping system what will be that is the plantation cropping system the rubber plantations are large scale आपनकर कोन monoculture ये आपनकर जीवो and this is a capital intensive farms meant for commercial scale only okay and this fits the plantation cropping system perfectly so eta बहुत time आपनकर examination ने आसे OPSC हला UPSC हला both examination ने this is a favorite question of the UPSC and OPSC and shifting cultivation कहले कोन कहउछ अरे ये कोडे गला कोन आपे आपे बोलेला कोडे हां shifting cultivation कहले कोन बुझुछ मते को shifting cultivation that is unsuitable for the कोन ना perennial crops like the rubber hela which require कोन permanent fields आपन को परमानेंट फील्ड दरकार रबर हेले चाष होउतिला आपनकर कोन तार पूरा जेनेटिकली चाष हेइ चालिथिबो बहुत टाइम चाहि होना नहीं the mixed farming हेले rubber is rarely combined with the livestock or the multiple crops so एटा आपनकर mixed farming सहित जाई परिबनी intensive monoculture that is through the rubber is the monoculture the formal माने कोन agronomic को हमें कहि परिबे this is a category is a plantation cropping and that is not intensive the monoculture okay next mate को the term multiple cropping आसी गला that means कोन बुझुछ what do you mean by the multiple cropping that means a one crop in 1 year तो बिल्कुल हेइ नथिबो monocropping कहिले एटे कोन बुझुछ ना that will monocropping होना नहीं मते को monocropping को बुझिबार नहीं two or more crops in 1 year that will be your multiple cropping केन हिज एग्जाम तोरो भलो हिची देखिछु भलो हिची एग्जाम देखिछु two or more crops in the same year that will be the multiple cropping that increase the land use efficiency and helps the
helps meet the food demand. So that will 2 or more. 3 crops in 3 years, 3 crops in 3 years hele ame taku kono na sequential heijiba, but that is very slow hela. Next 1 crop in 2 years, 1 crop in 2 years apanakar hei pariba ki that represent the kono na different types of fallow system. मते को सुगर केन पोटैटो व्हीट इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट अपन मन को व्हाइट राइस व्हीट राइस एंड अपन कर कोन व्हीट राइस एंड ग्राउंड नट कहि दिली बोथे एबे मते कुह व्हाट्स अबाउट द सुगर केन पोटैटो एंड व्हीट ये अपन कर गोटे बेस्ट एग्जांपल हबो कहार इज इट अ जेड क्रॉपिंग जेड माने कोन ना समर अपन कर लता भलिया जो सब वाटरमेलन हैला काकुडी हैला ए सब अपन कर माडी थिबा मे ताको कहबा दैट इज द जेड क्रॉप, not the potato at least. The sequential cropping ही परिबो कि yes the sequential cropping हमें कहा को कहबा ना that means the growing one crop after another जते बेले गोटे crop cultivation सरी गला हमें ताकू कोन फसल को पूरा काटी सारिले fruitful हे गले then आउ गोटे फसल को हमें fruitful करेबा is a in a defined or माने कोन order on the same land हमें ताकू कहबा that is the what sequential cropping. Clear? That means हमें कहि परिबा once आपनकर कोन annually sugar cane हैला after that potato rabi season रे हैला wheat आपनकर कोन late rabi season रे हैला ताकू हमें रिलेट करि परिबा. इंटरक्रॉपिंग कहिले कोन कहउछो ना crops are grown simultaneously not one after another. simultaneously means गोटे एका टाइम रे आपनकर दीटा जदी हैला सपोज एका टाइम रे आपनकर धान चाष हैला गोटे लैंड रे आपनकर गहम चाष हैला आमे ताकू कोन कहि परिबा दैट इज द इंटरक्रॉपिंग. पैरेलल क्रॉपिंग दैट इज नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड माने कोन एम्ति गोटे टर्म नुह दैट इज नॉट ए एग्रोनॉमिक टर्म छाडी दियो. नेक्स्ट मते को FCI was established आपनकर FCI केबे एस्टैब्लिश हेतिला मते कहलो 1947 इंडिपेंडेंस हेतिला एटा को पूरा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट छाडी दियो. 1965 रे हमें कहि परिबा कि yes or no the food corporation of India established under the food corporation act केबे 1964 act under 1965 रे हेतिला the act was 1964 हैला the act was 1964 मन रखिता and to why what was its purpose na to ensure the food security the MSP implementation and the buffer stock maintenance pai amar eta first time invent mane kono establish heithila. 1991 ame kahi pariba that is the economic reform year. The FCI predates this one that it is the economic reforms year boli एति की जिंस मन रखि पारु छ yes or no रे मते आंसर टिके दियो और टफ हे जाउची त मानक पई मते कुह इज दैट राइट और टिके टफ हे जाउची त मानक. गुड नाइट हमित कोन एते जल्दी गुड नाइट कहलोनी त माने thank you guys, thank you so much. Have a good night. Take care of yourself. But first of all, do prioritize your parents. This would be your first priority. Bye bye. चलो यार आंसर एठी अछि. You can check here. बाकी आपण मान जानि चंदी सिविल सर्विसेस रा क्लास को टाइम रे होची 9 टा 10 टा आपणकर होची मॉर्निंग टाइमिंग. आफ्टर दैट एठे पॉलिटी आपणकर नोचंदी सुजाता मैम देन आपणकर सुदीप सर नोचंदी PSIR. अल्टरनेटिव डे रे 1 PM रे आपणकर जेनेरिक टॉपिक्स आउची. देन आज मोर जाइछि 1 PM रे आपण मान देखिबे इंडिगो एयरलाइंस ऊपर नेकी. द 5 to 6 PM रे साइंस एंड टेक जाउछि एंड एथिक्स जाउछि अर्पिता मैम कर मोर अल्टरनेटिव डे रे 7 to 8 PM ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री जाउछि चंदन सर एंड केटी सांगर अल्टरनेटिव डे रे. हां चलो बैच लंचिंग अछि. चलो थैंक यू सो मच गाइस जो माने वेदांग सिविल सर्विसेज चैनल रे चाहुचो join हेबा पई you can scan this code to join right away. Thank you so much. Have a good night. Take care of yourself. But first of all, do prioritize your parents. This would be your first priority. No one else in the world. Thank you so much. Bye bye. Love you all. Rati 10 class re